So hello everyone. So today we are going to start with our next topic, that is fundamental rights. In this lecture, we are going to understand what is fundamental rights and what are the different provisions available in our Indian constitutions that deals with the fundamental rights. Okay. So fundamental rights are available in part 3 of our Indian constitution. ओके, तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ अवेलेबल है, किस पार्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इट इज अवेलेबल इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स? वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सो फंडामेंटल राइट्स क्या है? तो बेसिकली ये क्या है? इट इज अ स्पेशल सेट्स ऑफ राइट. ओके, फंडामेंटल राइट क्या है? तो इट इज अ स्पेशल सेट्स ऑफ राइट which are available to all the citizens of the country, to all the citizens of the country. Okay, so now here you might have one question arise, that's what about the foreigners which are coming to our country for a visiting purpose, or for just like they go to see some monuments like Taj Mahal or Qutub Minar, or they visit to Uttarakhand, Himachal. So many of the foreigners comes in our country for their holiday or something else. Okay, so is that fundamental rights are also available to foreigners, or is it only for citizen, or it only for सिटीजन? तो क्या जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे कंट्री में जो कि सारे सिटीजन को अवेलेबल है, सो इज इट ऑल्सो अवेलेबल फॉर द फॉरनर्स, और इज इट ओनली फॉर सिटीजन? So fundamental rights are also available for foreigners, but there are some fundamental rights जो कि specifically हमारे citizens, which is specifically available only for the citizens. Okay, स्पेशली अवेलेबल ओनली फॉर सिटीजन. तो फॉरनर्स के लिए भी फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है हमारे कंट्री में, बट कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो कि सिर्फ सिटीजन्स को ही है, वो फॉरनर्स को नहीं मिले हैं. और वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है, वी विल सी इन आवर कमिंग लेक्चर्स. Okay, I will tell you which all are the articles which only available for our, which only are especially available for the Indian citizen, and which is not available for the foreigners. Okay, so what is fundamental rights? So fundamental rights are special sets of rights which is available to all the citizens of the country and also for the foreigners. We can write here, and also for the foreigners. ओके, फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट्स में अवेलेबल है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो इट इज इन अवेलेबल इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और एंड फ्रॉम which article to which articles our fundamental rights are given? So fundamental rights are given from article 12 to article 35. ओके, सो कहां से कहां तक, किस से किस आर्टिकल तक अवेलेबल है हमारे फंडामेंटल राइट? सो इट इज अवेलेबल फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. ओके, नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल? ओके, फंडामेंटल राइट्स को, एफआर को फंडामेंटल क्यों बोला गया है? व्हाई इट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल? So we will understand that. Okay, why it is called as fundamental? Because, okay, because it is most important for an individual. Okay, why? Because it is important for an individual. It is important for an individual to achieve his full physical, intellectual and spiritual potential. Okay, ताकि क्या हो सके, ताकि क्या, जो भी इंडिविजुअल है हमारे कंट्री का, जो भी सिटीजन है हमारे कंट्री के, वो अपना फुल फिजिकल पोटेंशियल, स्पिरिचुअल पोटेंशियल वो अचीव कर सके. ओके, टू अचीव इट्स फुल फिजिकल and spiritual potential. Okay, and second reason is also that state cannot take away these rights. अब जो फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को मिले हैं, तो इस फंडामेंटल राइट्स को क्या है, स्टेट्स, अब स्टेट्स कहने का क्या मतलब हुआ? इट मींस एनी गवर्नमेंट एजेंसी और गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयूज, दे कैन नॉट टेक अवे दिस राइट. स्टेट्स कैन नॉट टेक away these rights. Or state, if states make any law,
अगर स्टेट कोई भी लॉ बनाता है अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स के, तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बी नल एंड वॉइड। तो फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोला गया है? एक तो सबसे पहले क्योंकि ये जो राइट्स है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंडिविजुअल टू अचीव इट्स फुल फिजिकल एंड स्पिरिचुअल पोटेंशियल। एंड सेकेंड इज, स्टेट कैन नॉट टेक अवे दिस राइट। जो भी फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं हमारे सिटीजन या इंडिविजुअल को, स्टेट्स कैन नॉट टेक अवे दिस राइट्स। और अगर स्टेट कोई भी लॉ बनाता है, ओके, स्टेट कोई भी लॉ बनाता है जो कि वायलेट करेगा हमारे फंडामेंटल राइट्स को, तो वो क्या हो जाएगा, नल एंड वाइड, मतलब वो लॉ ही खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, तो बेसिकली इट प्रिवेंट it prevents the state from becoming arbitrary, okay, or authoritarian. Like in the past we have seen, in the past we can see when we have like kingship ruling. So फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, हमारे गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को हो या सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो प्रिवेंट करता, वो स्टॉप करता है कि वो एक अथॉरिटेरियन ना बने। ओके, like the rule we see in the kingship time period, in the time of Mughals, you can say, or Marathas, or any, or like in the era of British. So they were like, they were the authoritarian. So fundamental rights क्या करता है, अभी के प्रेजेंट गवर्नमेंट को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो या स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उन सभी को प्रिवेंट करता है कि वो एक अथॉरिटेरियन मोड में ना जाए। सो दिस फंडामेंटल राइट्स डू दैट। ओके, और फंडामेंटल राइट्स जो है, और फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, सबसे पहले तो इट प्रिवेंट्स स्टेट, एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट, दैट फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट्स एक्शन। ओके, अगर स्टेट कोई भी सपोज एक्शन लेता है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अस प्रोटेक्शन। जैसे स्टेट ने कोई भी एक्शन लिया, लाइक सपोज आर्बिट्री किसी को अरेस्ट कर लिया या डिटेन कर दिया, ओके, विदाउट टेलिंग हिम द रीजन, और कोई भी एक राइट, जैसे किसी किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया, तो कोई भी स्टेट एक्शन के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि फंडामेंटल राइट्स, ओके, द क्वेश्चन इज कि जो फंडामेंटल राइट्स हमारा, क्या वो एब्सोल्यूट है? ओके, क्या जो फंडामेंटल राइट्स हमारा, इज इट एब्सोल्यूट? मतलब एब्सोल्यूट कहने का क्या मतलब हो गया कि फंडामेंटल राइट्स क्या वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे सिटीजन्स के पास, उस पर कोई भी लाइक गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनी मेजर्स और गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरप्ट इन दैट? तो इज फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट? सो द आंसर इज नो, फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट। द गवर्नमेंट कैन put some reasonable restrictions or limitation, okay, और वो कब करेंगे, when there is some national emergency or state emergency, like in the past we see there was a Manipur violence. So in that scenario, government can put some of the fundamental rights, they can put some reasonable restriction on some of the fundamental rights of the people. So fundamental rights are not absolute, बिल्कुल ही एब्सोल्यूट नहीं है, गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दैट। ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइट्स अवेलेबल। एक तो फंडामेंटल राइट्स होता है, ये हमने समझ लिया। ओके, वन इज फंडामेंटल राइट एंड द सेकेंड वन इज ऑर्डिनरी राइट्स। ओके, तो इन दोनों राइट्स में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ऑर्डिनरी राइट्स? ओके, तो ऑर्डिनरी राइट्स क्या है, तो बेसिकली ऑर्डिनरी राइट क्या है, वो जो इन्फोर्स, इट इज इन्फोर्स्ड, ऑर्डिनरी राइट्स आर इन्फोर्स्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय ऑर्डिनरी लॉ। ओके, तो जो ऑर्डिनरी लॉ है, ओके, या ऑर्डिनरी राइट हम लोग कहेंगे, ऑर्डिनरी राइट, तो बेसिकली इट इज इन्फोर्स एंड प्रोटेक्टेड बाय ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ कहने का क्या मतलब हुआ कि पार्लियामेंट में कोई भी जो लॉ ऑर्डिनरी, लाइक सिंपल मेजोरिटी और नॉर्मल मेजोरिटी से जो भी लॉ पास होगा, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑर्डिनरी लॉ। ओके, तो ऑर्डिनरी राइट्स क्या है, इट इज बेसिकली इन्फोर्स एंड प्रोटेक्टेड बाय ऑर्डिनरी लॉ, वेयर एज फंडामेंटल राइट्स
are protected, fundamental rights are protected and enforced by constitution. तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है. आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इट इज अवेलेबल इन आवर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो देयरफॉर फंडामेंटल राइट्स क्या है? इट इज प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड ऑर्डिनरी राइट्स क्या हमारा? इट इज प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ. ओके, अब ऑर्डिनरी लॉ क्या है? ऑर्डिनरी लॉ कैन बी चेंज्ड. ऑर्डिनरी लॉ कैन बी चेंज्ड. ओके, ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी राइट्स या ऑर्डिनरी लॉ वो चेंज हो सकता है बाय लेजिस्लेचर. ओके, मतलब पार्लियामेंट में क्या हो सकता है? अगर कोई भी ऑर्डिनरी लॉ है, ओके, लाइक सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो गया, सीए हो गया, तो इट कैन बी सम पॉइंट ऑफ टाइम इट कैन बी चेंज बाय एनी अदर गवर्नमेंट. सपोज नेक्स्ट टर्म में बीजेपी नहीं आए, इट INDIA अलायंस आ जाए, ओके, so it can change that citizen amendment act. So that is what it is, a ordinary law. So it can be changed by the legislature by ordinary process of law making. Okay, तो सिंपल सा वो एक लॉ को पार्लियामेंट में टेबल करेंगे एंड देयर विल बी वोटिंग एंड दैट लॉ विल बी चेंज्ड. ओके, बट ऑन द अनदर हैंड फंडामेंटल राइट्स कैन आल्सो बी चेंज. फंडामेंटल राइट्स भी चेंज हो सकते हैं, बट टू चेंज इट, फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने के लिए यू हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. हमें क्या करना होगा? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा अंडर आर्टिकल 368. okay, can also be changed by amending the constitution. by amending constitution. उसके लिए हमें क्या करना होगा? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा. और किस आर्टिकल के अंदर? तो आर्टिकल 368. तो इट मींस जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे, व्हेन वी विल अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सो वी विल रिक्वायर द फुल मेजोरिटी. जब वोटिंग होगा तो वो फुल मेजोरिटी के थ्रू जब पास होगा, देन you can amend the constitution under article 368. okay, so ordinary rights में क्या हो गया? ordinary process of law के थ्रू हम लोग चेंज कर सकते हैं, but on the other hand fundamental rights को चेंज करने के लिए we have to amend the constitution. okay, and third what we can say, अगर सपोज करो फंडामेंटल राइट्स हमारा वायलेट हो गया, ओके, लाइक राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट्स है, मान लो सपोज इट इज वायलेटेड. सो व्हेन आवर फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड, so we can directly approach the Supreme Court. okay, so in case of violation of fundamental rights, so we can directly approach Supreme Court of India. हम लोग डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं. okay, but in case of ordinary rights, in case of violation of ordinary rights, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें प्रोसेस होगा. इसमें प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले हमें सब ऑर्डिनेट कोर्ट जाना होगा. ओके, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जाना होगा, लाइक CGM और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ओके, उसके बाद फिर हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे एंड देन आफ्टर हम लोग SC जाएंगे. तो ऑर्डिनरी राइट्स में क्या है? हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं, नो डायरेक्टली. ओके, but on the case of fundamental rights we can directly approach to Supreme Court of India. So this is what difference between fundamental rights and ordinary rights. okay, so now we will see what are the different provisions available for the fundamental rights. So fundamental rights कहां से start होता है? तो it start from the article 12, okay, and end till article 35. ओके, सो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है? तो आर्टिकल 12 क्या? व्हाट इज आर्टिकल 12? सो बेसिकली इट डिफाइंस द टर्म स्टेट. ओके, इट डिफाइंस द टर्म स्टेट. तो स्टेट क्या कौन कौन से हो गए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स, ओके, एंड एनी स्टेट ओन्ड एजेंसीज. state owned agencies like LIC, okay, ONGC, kind of that.
Okay, and also it includes sometime Supreme Court also declare some of the big private agency like MNCs or also be categorized in term of state. Okay, so आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12 इज नथिंग, बेसिकली इट जस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट, क्योंकि अभी क्या हुआ कि अभी जितने भी हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे वहां पे टर्म स्टेट आएगा, तो व्हेन द टर्म स्टेट्स कम, so it will be either central government or central legislature or state government or state legislature or state owned agencies. Okay, PSUs हम लोग कह सकते like LIC, ONGC or some of the MNCs also is categorized under the definition of state. Okay, so now there is article 13. तो अब यहां पे हमने देखा ओके कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके हम लोग फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं. ओके, तो इट मीन्स कि देयर फंडामेंटल राइट्स कैन आल्सो बी अमेंडेड. अमेंडेड करने का मतलब होगा कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकते हैं, बट टू डू दैट वी हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसी के लिए क्या है कि वी हैव अ आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 13 क्लॉज 1. ओके, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कहता है? ओके, व्हाट आर्टिकल 31 13 क्लॉज 1 सेज दैट ऑल द लॉ दैट इज इन्फोर्स इन इंडिया, जितने भी लॉ है जो कि इन्फोर्स हुए इंडिया में इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जितने भी लॉ इंडिया में इन्फोर्स हुए थे वो क्या होंगे? अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड होंगे अगर वो वायलेट करते हैं वन और मोर फंडामेंटल राइट्स. सो व्हाट इट सेज that all laws that were enforced in India before commencement of constitution, तो जितने भी लॉ, ओके, लाइक वी हैव सीन दैट इन द ब्रिटिश एरा वी हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉ. ओके, आजादी से पहले भी हमारे हमारे कंट्री में बहुत सारे लॉ थे जो आज भी कंटिन्यू होते हैं. ओके, लाइक सीआरपीसी जो अभी चेंज होके बीएनएस हुए, भारत न्याय संहिता. तो सम ऑफ द लॉज विच वेर ऑलरेडी प्रेजेंट और विच वेर इन्फोर्स्ड इन इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या होंगे? इट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, it will be unconstitutional and void. Okay, and void if they violate one or more fundamental rights. So suppose there is a fundamental rights, right to equality, okay, or right to profession, ये fundamental rights है हमारे. Okay, right to constitutional remedies. सो अगर इनमें से कोई भी एक या उससे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स को कोई भी लॉ जो कि इन्फोर्स हुआ है इंडिया में, ओके, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ओके, असंवैधानिक उसे कहा जाएगा और उस लॉ को क्या हो जाएगा? वो वाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली अगर वो वायलेट करता है हमारा एक से ज्यादा फंडामेंटल राइट्स को. ओके, इफ दे वायलेट वन और मोर फंडामेंटल राइट्स. तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कहता है कि ऑल द लॉज which is enforced in India before the commencement of constitution shall be unconstitutional and void if they violate one or more fundamental rights. Okay, अब आर्टिकल 13 में क्या है? We have another clause, okay, and that is article 13 clause 2. आर्टिकल 13 clause 2 क्या कहता है कि स्टेट, ओके, अब स्टेट यहाँ पे टर्म आ गया, तो स्टेट कहने का मतलब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी स्टेट ओन्ड एजेंसी. सो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, स्टेट कोई ऐसा लॉ ना बनाए जो कि क्या करता है? जो कि वायलेट करता है या फिर टेक अवे करता है कोई भी एक या उससे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स को. अगर ऐसा कोई भी लॉ अगर स्टेट बनाती है तो देन सच अ लॉ इज पास, ओके, और सच लॉ will be considered as unconstitutional and void. ओके, अगर स्टेट कोई भी लॉ बनाता है जो कि क्या करेगा? हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, तो वैसा कोई भी लॉ अगर स्टेट लेजिस्लेचर में पास होता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड. ओके, सो लेट्स राइट दिस. तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या क्या कहता है? व्हाट आर्टिकल 13 क्लॉज 2 सेज? तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 सेज दैट state shall not make any law
shall not make any law that takes away one or more फंडामेंटल राइट्स। ओके, स्टेट ऐसा कोई भी लॉ न बनाए जो कि क्या करता है, एक या उससे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है या फिर लोग से इट टेक्स अवे। ओके, तो अगर ऐसा कोई भी लॉ, इफ सच अ लॉ, अगर इफ सच अ लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर, अगर ऐसा कोई भी लॉ पास होता है लेजिस्लेचर से, इट मींस पार्लियामेंट, इफ सच अ लॉ इज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, तो वो क्या होगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज, ओके, और इट शैल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड void। okay, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 व्हाट इट से, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 सेज दैट स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, स्टेट कोई भी एक ऐसा लॉ नहीं बनाए that take away one or more fundamental rights, and if such law is passed by legislature, अगर वैसा कोई भी लॉ पास होता है हमारे लेजिस्लेचर से, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड void। ओके, सो दिस इज व्हाट आर्टिकल 13 क्लॉज 2 इज। ओके, तो अब इसी के रेफरेंस में क्या हो गया, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या हो रहा है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 इज सेइंग कि स्टेट को कोई भी ऐसा लॉ नहीं लाना चाहिए। ओके, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, बट in the first amendment act, okay, so we will see, so in the first amendment act 1951, so in the first amendment act 1951 में क्या हुआ कि they introduce article 15 clause 4। ओके, उन्होंने एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया, दैट इज आर्टिकल 15 क्लॉज 4, जो कि क्या कर रहा था, जो कि वायलेट कर रहा था हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 1 को। तो अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और व्हाट इज आर्टिकल 15 क्लॉज 1। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या कहता है कि स्टेट क्या है, स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ओके, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन। ओके, सिंपली आर्टिकल 15 क्या है हमारा, राइट टू इक्वालिटी। ओके, सो आर्टिकल 15 इज व्हाट, राइट टू इक्वालिटी। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि स्टेट जो गवर्नमेंट है, जो भी states shall not discriminate any person of the citizen on the basis, on the ground of caste, religion, sex, okay, any of this they should not discriminate। but on the other hand, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में क्या हुआ, एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने, दैट इज आर्टिकल 15 क्लॉज 4। इट्स प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन फॉर SCs and STs एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो अब क्या, एक तरफ हमारा क्या कह रहा था आर्टिकल 51 कि हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है किसी को कास्ट के बेसिस पे, बट ऑन द अदर हैंड फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में क्या हुआ कि एक नया आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज आर्टिकल 15 क्लॉज 4, which provide for the reservation of SCs and STs and backward classes। We will see this article in our coming session। सो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में क्या हो गया, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 को। और साथ ही साथ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में और क्या लाया गया, इन द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, सो दे इंट्रोड्यूस 9 शेड्यूल। ओके, सो दे इंट्रोड्यूस 9 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 9 शेड्यूल क्या था, ओके, व्हाट इज 9 शेड्यूल। सो 9 शेड्यूल में क्या हो गया कि अगर कोई भी लॉ, ओके, कोई भी लॉ, इफ स्टेट पुट इट इनटू द 9 शेड्यूल, तो जो पावर था जुडिशियल रिव्यू का कोर्ट का, जब कोर्ट क्या करती है, जैसे कोई भी लॉ पास हुआ तो स्टेट कैन डू द जुडिशियल रिव्यू कि वेदर दैट लॉ इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स और नॉट, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। सो अगर कोई भी लॉ को अगर हम लोग 9 शेड्यूल में, इफ स्टेट पुट्स इट इनटू द 9 शेड्यूल, तो जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का कोर्ट को, ओके, could not be reviewed, okay, that law could not be reviewed by the judiciary। okay, so 9 शेड्यूल में क्या हो गया कि 9 शेड्यूल में, 9 शेड्यूल लाने से क्या हो गया, तो सिंपल हम लोग समझेंगे कि it took away the power of judicial review। it means क्या हो गया कि कोर्ट कैन नॉट
review the law. Okay, और जुडिशरी कैन नॉट रिव्यू द लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग वायलेटिव. अगर वो वायलेट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, ग्राउंड ऑफ बीइंग वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो कोर्ट कैन नॉट रिव्यू इट इफ इट इज पुट इनटू द 9th शेड्यूल of the constitution. Okay, so in this regard supreme court in IR कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. तो इस रिगार्ड में क्या हो गया, जब गवर्नमेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया और जुडिशियल रिव्यू के पावर को छीन लिया गया जुडिशरी से, तो इस रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया और किस केस में जजमेंट दिया? IR कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू, आई एम डिनोटिंग इट विद GR. ओके, GR is what? Judicial review. I am just writing here judicial review. Okay, so सुप्रीम कोर्ट ने IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस 2007 में क्या जजमेंट दिया? दैट जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो हम लोग अभी कमिंग सेशन में देखेंगे. दैट सुप्रीम कोर्ट हैड टोल्ड लाइक पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन अ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैज टोल्ड दैट कि in you can say in the Keswan and Bharti judgment, so Supreme Court has told that Parliament can amend the constitution, but it cannot amend the fundamental part of the constitution. मतलब जो basic structure है like secular, India is a secular country और there is a rule of law, तो जो एक fundamental parts of constitution को है उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है. Okay, so likewise that Supreme Court held that judicial review is a part of basic structure of constitution. Okay, and thus court can review the law. Court can review the law. तो कोर्ट क्या कर सकती है? 9th शेड्यूल में क्या किया गया? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में क्या हुआ कि कोर्ट ने पार्लियामेंट ने 9th शेड्यूल आया कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि टुक अवे द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू करने के लिए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस 2007 में कि जुडिशियल रिव्यू क्या है? एक पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और कोर्ट उस लॉ को रिव्यू कर सकता है. और जितने भी लॉ आफ्टर केशवानंद भारती जजमेंट के बाद पास हुए थे, कोर्ट कैन डू द पार्शियल जुडिशियल रिव्यू ऑफ 9th शेड्यूल. ओके, तो कोर्ट क्या करेगा? पार्शियल जुडिशियल रिव्यू ऑफ 9th शेड्यूल करेगा जितने भी लॉ हमारे केशवानंद भारती केस जजमेंट के बाद पास हुए थे. ओके, तो ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है हमारा, दिस फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ओके, सो दिस जस्ट अ सेकेंड, या सो दिस फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हमारा कब पास हुआ था? इट वाज पास इन 1951. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. प्रीलिम्स में इट कैन बी आस्क्ड लाइक फर्स्ट अमेंडमेंट वाज पास इन विच ईयर. okay, or it was become act in which year, they can give you the option. So 1951 में this was the act, first amendment act 1951. इस एक्ट को क्या हुआ? इस एक्ट को चैलेंज किया गया. okay, this act was challenged in Supreme Court. okay, in which case? in case is very important. okay, case को you must remember like this is IR कोयलो. किस केस में कहा गया था कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? तो इट इज इन द IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस 2007. और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और किस केस में? सो इन शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ओके, तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस
1951, तो 1951 में इस फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था, बट जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, इट वाज इन द फेवर ऑफ, बट जजमेंट क्या था? जजमेंट वाज इन फेवर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो फेवर, किसके फेवर में था? पार्लियामेंट के फेवर में था। और सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, ओके, सुप्रीम कोर्ट ने बताया, एससी हेल्ड दैट, सॉरी, so SC held that Parliament enjoyed two types of legislative powers. Okay, so Parliament enjoyed two types of legislative powers. कौन कौन से दो पावर्स है? तो फर्स्ट इज ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, एंड द सेकेंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर। तो सुप्रीम कोर्ट ने संकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951 में क्या बताया कि पार्लियामेंट एंजॉय करता है दो तरह के लेजिस्लेटिव पावर्स, two types of legislative power, that is ordinary legislative power and constitutional legislative power. Okay, तो parliament, okay, when parliament uses constitutional power, okay, uses constitutional power, और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर किस आर्टिकल के अंदर में यूज करेगा? तो अंडर आर्टिकल 368। ओके, तो जो आउटकम होगा, ओके, जब भी पार्लियामेंट यूज करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को अंडर आर्टिकल 368 में, तो जो आउटकम होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। तो आउटकम क्या होगा? आउटकम इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, जो कि क्या होगा? विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डेफिनेशन ऑफ लॉ। ओके, और ये क्या होगा? बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डेफिनेशन ऑफ लॉ। और डेफिनेशन ऑफ लॉ किस आर्टिकल में दिया गया है? तो इट इज अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 3। ओके, 13 क्लॉज 3 में क्या बताया गया है? द डेफिनेशन ऑफ लॉ। ओके, तो जब पार्लियामेंट यूज करता है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को अंडर आर्टिकल 368 में, तो आउटकम क्या होगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, और ये क्या होगा? इट विल बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डेफिनेशन ऑफ लॉ। ओके, ये क्या होगा? बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डेफिनेशन ऑफ लॉ। तो देयरफॉर इट विल बी द बियॉन्ड ऑफ स्कोप, बियॉन्ड ऑफ स्कोप ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2। ओके, और 13 क्लॉज 2 क्या है हमारा? कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, ओके, जो कि वायलेट करेगा फंडामेंटल राइट्स को, और अगर कोई भी लॉ पास होता है लेजिस्लेचर में तो इट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो उसी में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सुप्रीम पार्लियामेंट एंजॉय करता है दो तरह के पावर को, एक होता है ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर और एक दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर। तो जब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को यूज करेगा अंडर आर्टिकल 368, तो जो हमारा आउटकम होगा इट विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा तो इट विल बी द बियॉन्ड ऑफ स्कोप ऑफ डेफिनेशन ऑफ लॉ, and therefore it is beyond of scope of article 13 clause 2। Okay, so therefore when parliament, sorry, so therefore when parliament uses article 368, okay, therefore when parliament uses article 368, so it can amend any part of the constitution, it can amend any part of constitution including fundamental rights, including fundamental rights। Okay, so it can amend the fundamental rights also, but
इन केस अगर पार्लियामेंट यूज करता है, बट इन केस पार्लियामेंट यूजेस ordinary legislative power. Okay, ordinary legislative power, so I am denoting it with LP. So ordinary legislative power, तो जो आउटकम होगा, ओके, द आउटकम इज लॉ. ओके, तो आउटकम क्या होगा? आउटकम इज लॉ and would be under and therefore will be under the scope of under scope of article 13 clause 2. ओके, एंड शैल बी void if it violates fundamental rights. तो अगर कोई भी ऑर्डिनरी लॉ लाया गया, ओके, सिंपल से समझना, देखो, अगर कोई भी ऑर्डिनरी लॉ ब्रिंग किया गया पार्लियामेंट में, ओके, पास किया गया पार्लियामेंट में थ्रू लेजिस्लेचर, अगर वो वायलेट करेगा हमारे फंडामेंटल राइट्स को, तो इट विल बी नल, इट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट विल बी डिक्लेयर एज वॉइड. बट ऑन द अदर हैंड, अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का यूज करता है एंड इट अमेंडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, so it will be not within the scope of definition of law. Okay, so therefore it will be beyond the scope of article 13 clause 2. So therefore क्या होगा कि it can amend any part of the constitution including fundamental rights, and therefore it will not be declared as unconstitutional or void. Okay, तो ये जो जजमेंट था, ये जजमेंट किसमें था? इट वाज दिस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज इन द शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951. ओके, सो दिस वाज अ कंप्लीट जजमेंट. जजमेंट क्या था कि पार्लियामेंट यूजेस टू टाइप, पार्लियामेंट एंजॉय टू टाइप्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर. एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर हो गया जो एक ऑर्डिनरी लॉ बनाएगा, एंड सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर. ओके, और पार्लियामेंट जब यूज करेगा, ओके, व्हेन पार्लियामेंट यूज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर आर्टिकल 368, तो आउटकम क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है. तो इस जजमेंट में क्या, ओके, and beyond the scope of definition of law, therefore beyond the scope of article 13 clause 2. So therefore when parliament used article 368, okay, जब भी पार्लियामेंट आर्टिकल 368 को यूज करता है किसी भी लॉ को अमेंड करने के लिए या न्यू लॉ को लाने के लिए, तो इट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स. ओके, सो इन तो ये जजमेंट था हमारा शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951 में. Okay, but in Golak Nath versus State of Punjab केस 1967. ओके, तो 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स. ओके, बट इन गोलक नाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? ओवर रूल्ड किया अपना अर्लियर डिसीजन, जो अर्लियर जजमेंट दिया था, और एंड हेल्ड दैट आर्टिकल 368 कंटेन्स ओनली द प्रोसीजर. जो आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ प्रोसीजर कंटेन करता है, बट द नॉट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब केस ने क्या कहा? तो उसने सबसे पहले तो अपना जो अर्लियर जजमेंट था, जो ये अर्लियर जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसको ओवर रूल किया, और सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, ओके, सुप्रीम कोर्ट सेज टोल्ड दैट या हेल्ड दैट आर्टिकल 368, जो आर्टिकल 368 है, इट कंटेन्स ओनली द प्रोसीजर. ये सिर्फ प्रोसीजर को कंटेन करता है, बट not the power to amend the constitution, so therefore पार्लियामेंट के पास क्या है? therefore पार्लियामेंट had only ordinary legislative power. ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर. तो देखो, सिंपल से समझो, पहले जजमेंट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट के पास दो तरह का लेजिस्लेटिव पावर है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर और कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर. बट गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि
पार्लियामेंट के पास सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर ही है, और 368 में क्या है, सिर्फ प्रोसीजर है. इट डज नॉट टेल दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. देयरफॉर पार्लियामेंट हैड ओनली ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर. ओके, सो दिस वाज इन द जजमेंट ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967. और जैसे ही ये जजमेंट आया तो पार्लियामेंट ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया. ओके, पार्लियामेंट ने क्या रिस्पॉन्ड किया, पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट इनेक्टेड, जैसे ये जजमेंट आया पार्लियामेंट इनेक्टेड 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971. तो 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया और पार्लियामेंट ने क्या किया, इनेक्ट किया 24 अमेंडमेंट एक्ट 1971. और इस अमेंडमेंट में क्या किया गया, इस अमेंडमेंट में अमेंड कर दिया गया टाइटल को, अमेंडेड द टाइटल ऑफ आर्टिकल 368. ओके, 368 के टाइटल को क्या किया गया, अमेंड कर दिया गया. और अमेंड करके क्या आप टाइटल दिया गया, तो नाउ द टाइटल ऑफ आर्टिकल 368 इज द प्रोसीजर एंड द पावर टू अमेंड, सॉरी, the procedure and the power to amend the constitution. टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब क्या हो गया, अब पार्लियामेंट ने क्या कर दिया कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर है क्योंकि ये सिर्फ प्रोसीजर को कंटेन करता है. पार्लियामेंट ने क्या किया, 1971 में 24 अमेंडमेंट एक्ट को लाया और उसने क्या किया, टाइटल को ही अमेंड कर दिया गया. एंड नाउ द टाइटल इज व्हाट, द प्रोसीजर. प्रोसीजर भी है कि कैसे हम लोग किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है, उसको कैसे हम लोग अमेंड कर सकते हैं. और साथ ही साथ पावर दिया गया पार्लियामेंट को कि वो अमेंड कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को. ओके, अब इसी अमेंडमेंट को क्या हो गया, ओके, दिस अमेंडमेंट, दिस 24th अमेंडमेंट 1967 was also challenged. Okay, this 24th, okay, this 24th Amendment Act 1971 was also challenged. Okay, तो जितने भी स्टार्टिंग में अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, मोस्ट ऑफ देम वेर चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट. एज वी कैन सी, अगर हम लोग स्टार्टिंग से देखें तो मोस्ट ऑफ द, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था, इट वाज आल्सो चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951. देन आफ्टर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया तो अगेन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में अपने ही जजमेंट को ओवररूल किया गया. ओके, एंड देन पार्लियामेंट इनेक्टेड 24 अमेंडमेंट एक्ट. और फिर ये 24 अमेंडमेंट एक्ट को क्या किया गया, फिर चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट. ओके, और किस केस में, इन विच केस, सो इन केशवानंद भारती केस. ओके, इन केशवानंद भारती केस. ओके, and this was in the year 1973. This was in the year 1973. तो 1971 में 24 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, 1973 में केशवानंद भारती केस में इसे चैलेंज किया गया. ओके, दैट 24 अमेंडमेंट एक्ट वाज आल्सो चैलेंज बिफोर सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द 24th अमेंडमेंट एक्ट. ओके, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि 24 अमेंडमेंट एक्ट इज करेक्ट, देयर इज नो इशू, एंड सेड दैट Parliament under Article 368 has the power to amend any part of the Constitution. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, SC upheld the 24th Amendment Act and said that Parliament under Article 368 can amend any part of the constitution, any part of the constitution, any part of the constitution, including
फंडामेंटल राइट्स। ओके, फंडामेंटल राइट्स को भी पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। ओके, बट इट शुड नॉट डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट it should not disturb the basic structure of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर को ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा तो लॉ क्या हो जाएगा हमारा, नल वॉइड हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज इन द केशवन एंड भारती केस 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 24 अमेंडमेंट एक्ट वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओके, और बताया कि साथ ही साथ पार्लियामेंट क्या है कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, लेकिन बट वो क्या डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इट शुड नॉट डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो बेसिकली बेसिक दे आर डिफरेंट प्रोविजन, दे आर नंबर ऑफ प्रोविजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने नंबर ऑफ प्रोविजन डिफाइन किया गया है। ओके, नंबर ऑफ प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि दैट दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नंबर ऑफ प्रोविजन क्या है, तो फर्स्ट इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो बेसिक स्ट्रक्चर कहने का सिंपल सा मतलब हुआ कि एक बेसिक पार्ट, एक फंडामेंटल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, वो आप डिस्टर्ब मत करो। तो कौन कौन सा फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो वो डिफरेंट प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिफरेंट जजमेंट में बताया है। उसमें से पहला जो प्रोविजन है वो क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज बी सुप्रीम। ओके, सेकेंड इज rule of law. So there is rule of law that we are going to discuss in our coming session. So what is rule of law, we will discuss. So there should be rule of law and there are checks and balance. अगर हमारा जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, अगर कोई भी लॉ पास करा तो देयर मस्ट बी सम चेक्स एंड बैलेंस। ओके, कुछ मेजर्स होना चाहिए कि दैट लॉ इज गुड और नॉट। ओके, तो देयर मस्ट बी चेक्स एंड बैलेंस एंड देन जुडिशियल रिव्यू वी डिस्कस ऑलरेडी इन डिफरेंट जजमेंट, और किस जजमेंट में हमारा जुडिशियल रिव्यू को दिया गया, तो वी विल सी। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, इन द आयर कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस 2007 में जुडिशियल रिव्यू को पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया था। ओके, सो वी कैन राइट हियर बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट प्रोविजन क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, चेक्स एंड बैलेंस, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म। ओके, फेडरलिज्म, सो फेडरलिज्म इज ऑल्सो अ बेसिक स्ट्रक्चर। फेडरलिज्म का मतलब क्या हो गया, it is simply multiple level of government like central government, state government, local government, right? So the multiple level of government. And then secularism is also a basic structure of constitution. It means India has no official religion, India supports all religion. Okay, so India is a secular state. And separation of powers, separation of powers, and last, that is mandate to build a welfare state. तो कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर के प्रोविजंस है, सो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, चेक्स एंड बैलेंस, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, secularism, separation of power, mandate to build a welfare state. We know that we follow the concept of welfare state. As we can see in our present government, they always say सबका साथ सबका विकास. It means inclusive development. It means to help poor to perform well. Therefore, we provide different kind of reservation to them. So we follow the provision, we follow the concept of welfare state. Okay, so these are the basic structure of the, these are the some provisions which are considered as basic structure of constitution. If any law passed by the parliament, if they violate any of this provision, so it will be considered as unconstitutional and it will be null and void. जैसे सपोज इंडिया पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ लाए जो कि सेक्युलरिज्म को वायलेट करती हो, सेक्युलरिज्म, तो सेक्युलरिज्म क्या हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज नल एंड वाइड, दैट लॉ विल बी। ओके,
So this is what basic structure of constitution. Okay, so now we will classify fundamental rights. Okay, so classification of fundamental rights. Classification of fundamental rights. तो पहला जो फंडामेंटल राइट्स है दैट इज राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी. एंड राइट टू इक्वालिटी कहाँ किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल 14 to article 18. Okay, this all articles contains the concept of right to equality. The second is right to freedom. Okay, we will discuss all these article one by one. So first let's know what are the different fundamental rights available. So first is right to equality, and then right to freedom. This is from article 19 to 22. Yeah, 22. And then we have a right against exploitation. Right against exploitation. This is from article 23 to 24. And then we have a right to freedom of religion. Right to freedom of religion. It means we can practice any religion, we can choose any religion, we can spread any religion, and this is from article 25 to 28. Okay, so right against exploitation, right to freedom of religion, and then we have cultural and educational right. Okay, so cultural and educational right, this is from article 29 to 30. And last, that is right to constitutional remedies, in which we will discuss about the different writs jurisdiction like habeas corpus, mandamus, right? So right to constitutional remedies, and this is under article 32. Okay, so these are the classification of fundamental rights. First is right to equality, second is right to freedom, third is right against exploitation, fourth is right to freedom of religion. We can choose any religion. We can practice any religion. We can spread any religion. Cultural and educational right. And the last one is right to constitutional remedies. So first we will start with Article 14, that is right to equality. Okay. So starting with Article 14, that is right to equality, or we can say fundamental right to equality. Okay, so what article 14 says? Okay, what article 14 says? That state shall not deny to any person, first, equality before law, and second, equal protection of law. Equal protection of law. So article 14 is what? That it is right to equality. State shall not deny to any person equality before law and equal protection of law. So ये दो concept क्या है? Equality before law and equal protection of law. So we will understand one by one. So let's first start with first concept, that is equality before law. Okay, so we will understand what is equality before law. Okay, so this concept equality before law was originated in England. Okay, so this concept equality before law was originated in England, and it is a negatively worded concept. Okay, तो ये क्या है? इट इज अ नेगेटिवली वर्डेड कॉन्सेप्ट है. ओके, इसका मतलब क्या होता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब कि इट मीन्स absence of privilege. It means absence of privilege
enjoyed by any person, or individual in the eye of law. Okay, so there should be not any privilege given to any person. इसको और अच्छे से हम लोग समझे तो इट मीन्स दैट ऑल द पर्सन irrespective of their rank, okay, कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल irrespective of their rank, status or position are all equal before the law and they shall be treated equally by law. जैसे suppose there is some district magistrate or collector or SDM, okay, so they might be district magistrate, or if there is any issue with any normal citizen and there is issue with any MLA or MP, so they both will be treated equally in the eye of law. ऐसा नहीं होगा कि हाँ वो MLA है या फिर वो district magistrate है या फिर that person is very rich and the another person is very poor, so rich will be treated differently and the poor will be treated differently. So no, all the person irrespective of their rank, status, position, they should be treated equal before law, okay, or they shall be treated equally by law, okay, but there are certain exceptions. Okay, तो equality before law क्या हो गया? तो this concept was originated in England. It is a negatively word concept which means absence of privilege enjoyed by any person in the eye of law. It means all the person is irrespective of their rank, status. Okay, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ that all the person, just a second, all the person irrespective of their rank, status or position, okay, shall be treated equally by law. So this is what the meaning of equality before law. It means everyone is equal before law. Law के सामने हर कोई इंसान equal है. Okay, whether that person is rich or poor, they must be treated equally. So that is what the meaning of equality before law. It means law के सामने सभी कोई equal है. It means in front of law or before law, everyone is equal. Okay, but there are some exception. Okay, but there are some exception in this regard. Okay, there are some exception to the idea of equality before law. अब exception क्या है? तो we will first see the exception is, the first exception is that president of a governor, okay, president or governor, okay, cannot be questioned, cannot be questioned in any court, in any court of law. Okay, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेसिडेंट या गवर्नर को यू कैन नॉट क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर डिस्चार्जिंग देयर ऑफिशियल फंक्शन. ओके, अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर, okay, president or governor, if they are doing some their official function or they are discharge their some duty, okay, so that duty or that function, that law cannot be questioned in any court of law. So this is the first exception that president or governor cannot be questioned in any court of law. The second exception is, okay, the second exception we can write here is that there should be no criminal proceeding. No criminal proceeding can be initiated or continued against the president or governor. Okay, so no criminal proceeding can be initiated against the president or governor, against the president or governor. Okay, तो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग हम लोग प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट में स्टार्ट नहीं कर सकते हैं.
Okay, no criminal proceeding we can start. And the third exception is no civil proceeding. ओके, एक तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हम लोग इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, दूसरा हम लोग कोई भी सिविल प्रोसीडिंग, ओके, नो सिविल प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्ट, ओके, नो सिविल प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्ट अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर. और अगर हमें करना भी है स्टार्ट, इफ यू वांट टू स्टार्ट एनी सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर, तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फर्स्ट गिव them a notice, first give them a notice and wait for 2 months. मतलब 2 मंथ पहले ही हमें नोटिस सर्व करनी होगी. फर्स्ट वी हैव टू गिव देम अ नोटिस एंड वेट फॉर 2 मंथ्स बिफोर स्टार्टिंग एनी सिविल कोर्ट केस अगेंस्ट हिम. ओके, तो अगर कोई भी सिविल कोर्ट अगेंस्ट केस, सिविल कोर्ट केस स्टार्ट करना है, ओके, सिविल कोर्ट केस अगेंस्ट हिम और देम, तो अगर हमें प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ कोई भी सिविल कोर्ट केस स्टार्ट करना है, तो वी हैव टू फर्स्ट गिव देम नोटिस. ओके, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उन्हें नोटिस देना होगा और वेट करना होगा 2 मंथ के लिए. ओके, तो मतलब 2 मंथ पहले हमें उन्हें नोटिस प्रोवाइड करना है. सपोज अगर हमें अभी प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ कोई भी सिविल कोर्ट केस स्टार्ट करना है, तो 2 मंथ नोटिस शुड बी, और कह सकते हैं कि आज हमें उन्हें एक नोटिस भेजना होगा. टुडे वी हैव टू गिव देम अ नोटिस and we have to wait for 2 months. So it means like right now it is July, or mostly July is ended August. So we have to wait for August and September, and in October that case can be started. Okay, that case can be started. So there are some exceptions. So these are the some exceptions regarding to president and governor. Okay, so everyone is equal in front of law, but there are some exception given to president and governor of state. Okay, now we will understand the concept of rule of law. Okay, so in the basic structure I told you that this is a basic structure of constitution, that is rule of law, that we are going to discuss right now. Okay, ki rule of law hai kya, what is rule of law? So let's understand the concept of rule of law. तो ये तो पहला कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इसी में हम लोग समझेंगे कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ. ओके, so rule of law, as this equality before law was, this concept was originated in England, so similarly rule of law concept is also has been taken from England. Okay, has been taken from the England. तो रूल ऑफ लॉ कहने का क्या मतलब हुआ, रूल ऑफ लॉ मीन्स लेक्स सुप्रीमस. ओके, लेक्स सुप्रीमस, रूल ऑफ लॉ कहने का क्या मतलब हुआ, रूल ऑफ लॉ मीन्स लेक्स सुप्रीमस. दैट इज, कहने का क्या मतलब हुआ लेक्स सुप्रीमस कहने का, दैट लॉ इज सुप्रीम. ओके, जो कानून है इट इज सुप्रीम, लॉ इज सुप्रीम, एंड देयर इज absolute supremacy of law of the country. ओके, इट मीन्स कि लॉ से बड़ा कुछ, कानून से बड़ा कुछ नहीं है उस देश का, जो जैसे हमारे कंट्री का जो भी लॉ है, जो भी कानून है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है. इट मीन्स लॉ इज सुप्रीम एंड देयर इज absolute supremacy of law of the country. Okay, and it oppose the influence of any arbitrary power. Okay, it means कोई भी arbitrary power, जैसे सपोज करो पुलिस. ओके, पुलिस फोर्स, अगर पुलिस फोर्स आपको विदाउट एनी रीजन आपको डिटेन करती है या कुछ भी करती है, सो देयर इज लॉ मेड फॉर दैट. आप उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में ला सकते हो एंड यू कैन मेक देम पनिश फॉर दैट. Okay, so that is what, that law is supreme and there is absolute supremacy of law, and it opposes the influence of any arbitrary power. Okay, so therefore the administration है, therefore तो जो notion है administration का, notion of administration, okay, changed from
चेंज फ्रॉम रेक्स लैक्स ओके टू लेक्स लैक्स, मतलब लॉ इज सुप्रीम. ओके, लॉ इज सुप्रीम एंड देयर इज एब्सोल्यूट supremacy. And Supreme Court, I told you that Supreme Court has defined this rule of law as a basic structure or component of basic structure of constitution. Okay, it is Supreme Court has declared rule of law as component of basic structure of constitution. Now rule of law has three principles. Okay, it has three principles and we will see what are all those principles. तो तीन principle क्या है? सबसे पहला principle, okay, that no man or no person can be punished or made to suffer except for violation of law. किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को पनिश नहीं कर सकते हैं या उसे सफर नहीं करवा सकते हैं जब तक कि वो कोई एक लॉ का वायलेशन नहीं किया हो. ओके, और सच अ वायलेशन, और जो अगर सपोज उसने वायलेशन किया भी है, इफ द पर्सन हैज डन दैट वायलेशन, तो दैट वायलेशन मस्ट बी स्टैब्लिश इन ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ लैंड. ओके, अगर सपोज करो, suppose there is some incidents in your city, okay, incident like some strike or some, you can say, protest has been going in the city, और इस वजह से क्या हो गया, राइट्स हो गए, दंगे हो गए, एंड you were not involved in that right. okay, आप उस दंगे में इन्वॉल्व नहीं थे, फिर भी आपको क्या हो गया, पुलिस पुलिस फोर्स ने क्या किया, आपको डिटेन कर लिया गया. ओके, कि आपने वायलेशन ऑफ लॉ किया है. तो उस चीज को क्या करना होगा, उस चीज को पुलिस को, इट दे मस्ट हैव टू एस्टेब्लिश, okay, they must have to establish that this violation of law is done by that person. और simple example में समझे तो like right now there is नीट इश्यू गोइंग ऑन, नीट का मुद्दा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि जजमेंट दे दिया दैट दिस इज, यू कैन से, लोकलाइज्ड इवेंट. बट उस इवेंट में भी क्या हुआ है, वी हैव सीन देयर वेर मेनी अरेस्ट फ्रॉम पटना एंड हजारीबाग. तो अब उसमें से क्या है कि अभी जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया है, तो टू मेक देम पनिश, ओके, उन्हें सजा दिलवाने के लिए और उन्हें सफर करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा पुलिस फोर्स को या सीबीआई को, कि दे हैव टू प्रूफ इन द ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लैंड दैट दिस लॉ और दिस इवेंट is done by these person. Okay, so this is the first principle, that no man can be punished, no man can be punished except for violation of law. Okay, except for violation of law. और इस वायलेशन ऑफ लॉ को क्या करना होगा, इट मस्ट बी established, it must be established in the ordinary court of land. in the ordinary मतलब किसी भी कोर्ट में आपको प्रूफ करना होगा, इन द ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लैंड में, तभी जाके आप उस पर्सन को पनिश कर सकते हो. ओके, सेकेंड इज देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन टू एनी पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ. मतलब क्या होगा, किसी भी पर्सन को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे. ओके, सो ऑल, वी कैन सिंपली राइट हियर, ऑल पर्सन are subject to ordinary law. Okay, all persons are subject to ordinary law of land without discrimination. There will be no discrimination, we can simply understand. Okay, there should be, matlab, there will be no discrimination amongst the people. They are all subject to ordinary law of ordinary law of land. मतलब सपोज इंडिया, ओके, लैंड कहने का मतलब हो गया सिंपल द कंट्री, स्टेट और ये लोकेलिटी. तो अगर आप किसी भी कोर्ट में जा रहे हो, ओके, तो देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट यू, कि आप हिंदू हो एंड यू आर मुस्लिम्स, और यू विल बी नो, यू विल बी डील डिफरेंटली. सो देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन. ओके, और रूल ऑफ लॉ का जो थर्ड प्रिंसिपल है, ओके, द थर्ड, अब देखो बेसिकली क्या, रूल ऑफ लॉ हमने कहां से लिया है, वी हैव टेकन दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द इंग्लैंड. ओके, एंड ये दोनों क्या है, दिस बोथ आर कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड. लेकिन जो थर्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, जो हम लोग इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं, विच वी आर अप्लाइंग इन इंडिया, वो क्या है, मॉडिफिकेशन है थर्ड प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, जो कि अप्लाई होता है इंग्लैंड में. अब मॉडिफिकेशन क्यों है, क्योंकि देखो इंग्लैंड में क्या है, इन इंग्लैंड, कि वहां पे क्या है, हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है.
ओके, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहने का क्या मतलब हो गया कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ इनेक्ट करती है, ओके, वो कंसीडर हो जाता है लॉ। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ। और जितना भी इनेक्टमेंट, जितना भी लॉ होगा जो लेजिस्लेचर से पास होगा, वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट नहीं करना चाहिए, इवन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी वायलेटेड। सो देयरफॉर क्या है कि जो थर्ड प्रिंसिपल ऑफ यू कैन से रूल ऑफ लॉ है, वो क्या है, मॉडिफिकेशन है। ओके, तो वी कैन सिंपली राइट हियर थर्ड, sorry, so third principle of rule of law applied in India, ये क्या है, it is modification, it is modification। और किसका मॉडिफिकेशन है, तो इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ थर्ड प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ अप्लाइड इन इंग्लैंड। ओके, तो ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए बिकॉज इंडिया में क्या है, इन इंडिया, ओके सो लेट मी राइट हियर, इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ। ओके, इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ। ओके, सुप्रीम लॉ, एंड ऑल द इनेक्टमेंट्स जो कि लेजिस्लेचर से पास होंगे, इट मस्ट बी, ओके सिंपल आई कैन राइट हियर, all the enactment, or you can say all the enactment or law must be consistent with provision of constitution। लेकिन इंग्लैंड में क्या है, इन इंग्लैंड एवरी enactment of parliament is considered law। ओके, तो कोई भी अगर लॉ पास हुआ है पार्लियामेंट में, यूके के पार्लियामेंट में, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज लॉ, वेर एज इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ, तो इट मस्ट बी इन प्रोविजन inconsistent with the constitution। Okay, so this is what rule of law, and these are the three principles that no man can be punished except for the violation of law, and that violation should be established in the ordinary court of land। All persons are subject to ordinary law of land without discrimination। And third principle क्या है, modification of third principle of law of applied in land, because in India constitution is supreme law, all the enactment or law must be inconsistent with the provision of constitution, whereas in England every enactment of parliament is considered as law। So this is what rule of law, this is equality before law, and now we will understand the second, that is equal protection of law। Okay, so now we will understand the second concept, that is equal protection of law। Okay, so this equal protection of law, this concept, okay, this concept was originated, sorry, so this equal protection of law concept was originated in USA। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट कहां पर ओरिजिनेट हुआ था, यूएसए में। और ये क्या है, दिस इज अ पॉजिटिवली वर्डेड कॉन्सेप्ट है। ओके, इट इज अ पॉजिटिवली वर्डेड कॉन्सेप्ट और आइडिया वी कैन से। ओके, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब कि इट मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। और इसी से क्या होता है, इसी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से क्या होता है कि जो हम लोग रिजर्वेशन पॉलिसी, जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने अमेंडमेंट करके प्रोवाइड किया है, जो हम लोग ओबीसी, एस सी, एस टीज एंड डिफरेंट ईडब्ल्यूएस सेक्शन को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी के थ्रू जस्टिफाई किया जा रहा है। ओके,
तो इसका कहने का क्या मतलब हो गया कि इट मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। कहने का क्या मतलब हुआ, देखो इसका कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि इक्वालिटी मीन्स ट्रीटिंग सिमिलर पीपल इन सेम वे। ओके, कहने का मतलब क्या हो गया कि इफ टू पर्सन आर नॉर्मल, ओके इफ टू पर्सन आर नॉर्मल और हम लोग रेस करवा रहे हैं दोनों के बीच में, तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो कंडीशन है सिमिलर है, तो जो ऑप्शंस जो प्रायोरिटी दिए जाएंगे दोनों को सेम दी जाएंगी। ओके लाइक 100 मीटर के पास आपको हो सकता, सपोज देयर इज प्रोविजन दैट आफ्टर 100 कंप्लीटिंग 100 मीटर देयर विल बी एनर्जी ड्रिंक। ओके, और सिंपल इस तरीके से हम लोग समझे कि बोथ द पर्सन हैज टू कंप्लीट द 100 मीटर रेस इन 10 सेकेंड। ओके, बोथ द बोथ इंडिविजुअल, बोथ नॉर्मल इंडिविजुअल वी कैन से, एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं। इक्वालिटी का देखो इसका मतलब क्या हो गया, मींस इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज टू नॉर्मल इंडिविजुअल आर देयर एंड बोथ आर कॉम्पिटिटिंग फॉर 100 मीटर रेस, और दोनों के लिए हमने प्रोविजन डाला है कि बोथ हैव टू कंप्लीट द रेस विद इन 10 सेकेंड। बट ऑन द अदर हैंड लो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल है और एक क्या है, फिजिकली चैलेंज्ड इंडिविजुअल है, तो क्या अब दोनों जो लोग हैं दे बोथ आर सिमिलर? नो, ऑब्वियसली दे आर नॉट सिमिलर। तो अब क्या होगा कि जो फिजिकली चैलेंज इंडिविजुअल है इट नीड्स डिफरेंट ट्रीटमेंट ताकि कंपटीशन क्या हो सके, फेयर हो सके। ओके, सो दिस इज व्हाट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहने का मतलब हुआ कि मींस इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। ओके, सिंपल से अगर मैं यहां पे तुम्हें बताऊं तो इक्वालिटी मींस treating similar people in the same way। अगर एक जैसे लोग हैं तो उनको सेम तरीके से हम लोग ट्रीट करेंगे। बट हमें ये भी रिकॉग्नाइज करना होगा, बट रिकॉग्नाइजिंग दैट डिफरेंट पीपल might need different treatment, right? Treatments to be fair। ओके, सो देयरफॉर आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 जो इंश्योर करता है कि एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। ओके, सो देयरफॉर इक्वलिटी कहने का क्या मतलब हुआ यहां पे, देयरफॉर इक्वलिटी is not about applying the same rule, is not about applying the same rule to everyone। कहने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, देखो अब यहां से आप लोग को समझ में आएगा, सॉरी, same rule to everyone। okay, so equality is not about applying the same rule to everyone no matter what, but about adjusting the rules, but about adjusting the rules to be fair to everyone। ओके, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहने का क्या मतलब हुआ कि दैट इट मींस इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। और यहाँ पे इक्वलिटी कहने का मतलब हुआ कि इक्वलिटी इज नॉट अबाउट अप्लाइंग द सेम रूल्स टू एवरीवन। इक्वलिटी का यहाँ कहने का ये मतलब नहीं हुआ कि सभी लोग को एक ही समान रूल दे देंगे, बट वी हैव टू रिकॉग्नाइज पीपल हु माइट नीड डिफरेंट ट्रीटमेंट, जिन्हें कुछ और की जरूरत हो, so according to that we have also have to adjust the rules to be fair। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अगर दो नॉर्मल इंडिविजुअल हैं तो तुम इनके लिए प्रोविजन ठीक है सेम हम लोग रखेंगे 100 मीटर रेस के लिए, बट इफ देर इज अनदर पर्सन हु इज फिजिकल चैलेंज, तो अगर हम लोग सेम रूल रखेंगे तो इट मस्ट नॉट बी फेयर फॉर हिम। तो उसी के लिए क्या है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई इंसान, कोई पर्सन अनइक्वल है तो वी हैव टू एडजस्ट द रूल्स so that the competition should be fair। So therefore in India we provide reservation to different categories of people like SC STs
SCs, STs, OBCs. Why? Because after the independence there were some commission like OBC को जो commission OBC को जो reservation मिला, it was after the report of Mandal Commission that they identify that 3,000 3,000 something people also need catering of the government. Okay, also need some special provision. So that's why government put them in the other backward classes. There was SC and STs, they were getting the reservation. Why? Because they were you can say not properly represented in the country, so they got the reservation. But there were some other peoples also who were not who were not perfectly represented in the country. So therefore in the Mandal Commission this given the report that this sects of peoples they should also get the reservation, and therefore another category come, that was OBC. We will understand, we will get to know each and everything, that what was Mandal Commission, which government has formed that commission, what was their report, okay, and what was the Supreme Court judgment. Okay, so right now this is what equal protection of law. It means treating similar people in the same way, but also we have to recognize that different people might need different treatment to be fair. Okay, so this is what equal protection of law, and this is Article 14. Okay, so this is what Article 14, that state shall not deny to any person equality before law and equal protection of law. Okay, so I hope you all have understand this Article 14. So that's all in this lecture. So in this lecture we have understand what. So let me just summarize it. So we go from the starting. So we have understand what is fundamental rights. So it is available in the part 3 of the Indian Constitution, and from Article 12 to Article 35 there are fundamental rights. What is Article 12? So basically it defines the states. Okay, who are state, what is state. Okay, and what is fundamental rights? So basically it is special sets of rights available to all the citizens of the country and also for the foreigners. Okay, and one thing more, I told you that there are some fundamental rights which are not available to the foreigner, which is only for the you can say citizens. So which are the fundamental rights which are not available for foreigners? So I will write here FR, not available to foreigners. Okay, so what are the all fundamental rights which are not available to foreigners? So Article 15. Okay, so we will see what is Article 15, what is Article 16. So at that time I will explain you. For so just for now you have to understand, you have to know that which are the fundamental rights which are not available to foreigners. So Article 15, Article 16, Article 19, 29, 13. So these are not available to foreigners, they are exclusively for Indian citizens only. Okay, so this is what fundamental rights. Okay, and why it is called fundamental? Because states cannot take away these rights, and this is important for individual to achieve its full physical and spiritual potential. And it also prevent the state from becoming arbitrary and authoritarian, and it provide protection against state action. Okay, now the question was, is fundamental rights absolute? So no, it is not absolute in nature. In state emergency, national emergency, government can put some restriction to the fundamental rights. Okay, now there are two sets of rights, fundamental rights and ordinary rights. We have understand that fundamental rights protected and enforced by constitution, and it is protected and enforced by ordinary law. Okay, and then I told you Article 12 defines states, and Article 13 clause 1 what is defines? So it defines that all law enforced in India before the all laws in India enforced in India before the commencement of constitution will be considered as unconstitutional and void if yadi it violate one or more fundamental rights. And Article 13 clause 2, then First Amendment Act, and why it was challenged. Okay, in which case challenged. So different things we have understand till now in the fundamental rights. So in the next classes, in the next lecture we will understand what is you can say Article 15, 16. Okay, so we will try to complete the complete fundamental rights in that lecture. Thank you, see you in the next lecture.